Okay. Okay. Hello, Hello. Shardul. 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 Rutuja. Rutuja. Okay. Are you able Are to you able to listen? listen? Okay. 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 So today So we will today we start will our start our next topic, that is client side and side and server side server side frameworks. framework. Okay. We have We have seen seen technologies, technology, both the both the technologies we have we seen, have seen, that is that is client side client as side well as as well server as side technologies. Okay. okay. So So in today's in lecture, today's we will lecture see we what will see are what are frameworks. frameworks. Okay. So I will share one screen with all of you. Just go through that. Okay. Today we are going to see client side and server side frameworks. In this unit, we have two parts, that is AngularJS and second one is Node.js. Okay. So in AngularJS, we will be learning about what is MVC architecture. Okay. So MVC basically stands for model, view, and controller. Okay. So what is that architecture, that we will understand. Okay. How it is used to write the AngularJS programs, that we will understand. Okay. After that, we will see what are directives. Okay. Then what are expressions inside our AngularJS. Then how to write controllers inside AngularJS. Okay. Then how to apply filters, how to write tables, modules, forms, then how to use includes, views, and scopes. And then we will see what are services, dependency injection, custom directives, and how what is the concept of internationalization. Okay. So all these concepts we will cover, okay, in today's lecture. And after that, we will start with introduction to Node.js. Okay. So in that we have introduction to struts. Okay. Till now you might have only heard about strut. Okay. But in this unit you will be actually learning all about those things. Okay. So what is struts, then how is its architecture, how to do the configuration of struts. Okay. Then what are actions, interceptors in Node.js. Okay. Then what are result types, validations, localization, exception handling, and annotations. Okay. So these are the contents of this unit, and we are going to start with now AngularJS. Okay. So let us see what is AngularJS. Okay. Today's lecture is very important. Okay. AngularJS. AngularJS is very powerful JavaScript framework. ये क्या है, एक फ्रेमवर्क है. Which kind of framework it is? It is JavaScript framework. Okay. So it is basically used in single page applications projects. Okay. It extends HTML DOM with additional attributes. Okay. हमने already HTML जब पढ़ा था उसके साथ हमने DOM देखा है. देखो, DOM elements, document object model elements. Okay. So what are those? Those were supporting the additional things with your attributes. Okay. So here this AngularJS extends HTML DOM with additional attributes and makes it more responsive to user actions. ठीक है. हमारा जो वेबसाइट है, it should be more responsive to the user actions. So it can be done by using AngularJS. Okay. So AngularJS is open source, completely free, and used by thousands of developers around the world. Okay. So AngularJS क्या है? It is an open source, okay, platform, and it is free of cost. Okay. And many developers are using nowadays AngularJS to develop their websites. Okay. It is licensed under Apache license 2.0. Now the question is why to learn this AngularJS. Okay. So first we will understand what are its features. Okay.
AngularJS, I have already told you, it is open source web application framework. Who has developed this AngularJS? Okay, so this AngularJS is originally developed in 2009 by Misco Hevery, okay, and Adam Abrons. Okay, so you can see here, you must remember all these things, okay, from your placement point of view as well. Okay, so when AngularJS was developed, it was developed in 2009 by Misco Hevery and Adam Abrons. It is now maintained by Google. ये आपको सबको ध्यान में रखना है कि AngularJS is maintained by Google and its latest version is 1.2.21. You can search on internet also what is the latest version of this AngularJS. Okay, now the question is why to learn this AngularJS. Okay, so AngularJS is efficient framework that can create rich internet applications. ठीक है, तो ये किस लिए सीखना है हमें? क्योंकि एक efficient framework है which can create rich internet applications. ठीक है, इंटरनेट पे बहुत सारे आप applications देखते हो, so which are rich in their design as well as which are very user friendly. So all these can be developed by using AngularJS. This AngularJS provides developers an option to write client-side applications using JavaScript in clean model view controller way. ठीक है, हम यहाँ पे by using this AngularJS you can create client-side applications. Okay, by in the model view controller way. Okay, so ये MVC architecture हम देखने वाले हैं. ठीक है, हमने HTML में देखा है कैसे लिखना है कोड, सब देखा है, but how to write in MVC way. Okay, that also we will understand in this unit. Okay, so applications written in AngularJS are cross browser compliant. ठीक है, what is cross browser compliant? So AngularJS automatically handles JavaScript code suitable for each browser. ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि जो भी हमने कोड लिखा है AngularJS में, सो यू रन इट ऑन एनी ब्राउजर. ओके, इट विल नॉट अफेक्ट एनीथिंग. ओके, सो हम देखते हैं, देखो एक आधा एप्लीकेशन हम डाउनलोड करते हैं और अलग अलग मोबाइल डिवाइसेस पे इंस्टॉल करते हैं, तो कभी कभी पूरा उसका जो पेज है वो दिखता नहीं है हमें. ओके, so that is not cross browser compliant. Okay, but AngularJS provides you cross browser compliant applications. Okay, so it automatically handles this code suitable for each browser. Okay, then AngularJS is open source, completely free, used by thousands of developers around the world. Okay, and it is licensed under Apache license version 2.0. Okay, overall AngularJS is a framework to build large scale high performance and easy to maintain web applications. ठीक है, तो बेसिकली क्या होता है, AngularJS एक फ्रेमवर्क है जो आपको लार्ज स्केल और हाई परफॉर्मेंस वेब एप्लीकेशंस बनाने के लिए और उसको मेंटेन करने के लिए ये यूज होता है. ओके, सो दिस इज जनरल ओवरव्यू अबाउट योर AngularJS. ओके, नाउ I will directly show you one simple program on AngularJS and by which you will understand what are the things in AngularJS. Okay, so let us proceed for that particular example. Now first we will understand this simple hello world program by using AngularJS. Okay, so see this particular screen. Okay, so I have written here my AngularJS code. I have written it in inside your HTML file itself. Okay, so यहाँ पे आप देख सकते हो inside your head I have one title tag. Okay, यहाँ पे हमने उसको टाइटल दिया AngularJS first application. ठीक है, let us see what is there inside body tag. Okay, in body I have given one heading sample application. Okay, and after that you can see I have created one division here, div, and I have used one directive here, that is ng app is equal to डबल कोट में मैंने यहाँ पे कुछ उसको नाम नहीं दिया है फिलहाल. ओके, इट इज नाउ ब्लैंक वन. ओके, व्हाट इज ng app I will explain you. Okay, now what is next thing, I have written one paragraph, enter your name, and I have took one text box. Okay, input type equal to text means what, I have created one text box, and after that I have used ng model equal to name. Okay, so this is another directive of your AngularJS. Okay, ng app एक हो गया, उसके बाद ng model एक हो गया, and I have written ng model is equal to name here. Okay, now what I have done, I have written here another paragraph and I have written hello. I have used one tag here, span tag. Okay, which will work in line with this particular paragraph itself, and I have written one another directive here and it is ng bind. Okay, so यहाँ पे तीन नए चीजें आपको दिख रही हैं. Okay, and ng bind is equal to I have written as name. Okay, so now here you can see there are three things.
The first one is ng app, second is ng model, and third one is your ng bind. Okay, so what are these things? So let us see. ng app, ng app is the directive which is used to bind your html file with angular.js file. Okay, so आपका जो html डॉक्यूमेंट है उसको angular.js के साथ बाइंड करने का काम जो है वो ng app करता है. ओके, आफ्टर दैट ये ng मॉडल जो लिखा है मैंने यहाँ पे, सो व्हाट इज यूज ऑफ दिस? दिस ng मॉडल बाइंड्स योर इनपुट कंट्रोल्स और html कंट्रोल्स विथ angular.js. ठीक है, इनपुट कंट्रोल्स कौन से? आपके टेक्स्ट बॉक्सेस है, फॉर्म के एलिमेंट जो भी है वो सब क्या है? इनपुट कंट्रोल्स है. उसको बाइंड आपके angular.js के साथ करने के लिए यहाँ पे ng मॉडल वर्क करता है. ठीक है, सो वॉट एवर आई विल राइट इन साइड दिस टेक्स्ट बॉक्स दैट विल बी बाइंड विथ योर angular.js by using ng model. Okay, and after that I have written ng bind. So what is use of this ng bind? This ng bind will bind your views of html with angular.js. Okay, तो यहाँ पे हमारा जो सिंपल टैग्स रहते हैं जहाँ पे इनपुट कंट्रोल्स नहीं है बट सिंपल टैग्स है लाइक पैराग्राफ्स. ओके, उनको बाइंड करने का काम हमारा ng bind डायरेक्टिव करता है. ओके, नाउ लेट अस सी दिस एग्जांपल अगेन. ओके, यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि अभी यहाँ पे क्या किया है हमने कि इनपुट कंट्रोल जो है हमारा टेक्स्ट बॉक्स उसको मैंने ng मॉडल इक्वल टू नाम लिखा है, नेम. ओके, सो दिस इज व्हाट, दिस इज योर मॉडल. ओके, ng model is your model, ng bind is your view. Okay, MVC architecture, what is that MVC architecture? Okay, and this ng app is nothing but it is a controller. Okay, so simply ng app is your controller, ng model is your view, and ng bind is your ng model is your model and ng bind is your view here. Okay, so यहाँ पे जब मैंने लिखा है, you can see here ng मॉडल इक्वल टू नेम. अभी मेरा जो ये टेक्स्ट बॉक्स है, इस टेक्स्ट बॉक्स में मैं यहाँ पे आपको आउटपुट दिख रहा है. ओके, सैंपल एप्लीकेशन एंटर योर नेम. मैंने यहाँ पे जो टेक्स्ट बॉक्स में जो लिखा है am. ओके, जैसे ही मैं टाइप कर रहा हूँ टेक्स्ट बॉक्स में, वहीं पे ये नीचे आपको यहाँ पे जैसे जैसे टाइप करते रहूंगा वैसे वैसे मैं जो भी टेक्स्ट बॉक्स में टाइप कर रहा हूँ वो आपको यहाँ पे डायरेक्टली आउटपुट दिखाएगा, हेलो am. ओके, समझ में आ रहा है? सो व्हाट इज हैपनिंग, दिस टेक्स्ट बॉक्स इज बाइंड विथ योर paragraph also. Okay, by using ng bind tag or attribute. Okay, so let us execute this particular program. मैं अभी इसको एग्जीक्यूट करके दिखाता हूं आपको how it actually works. So I will go to NetBeans. Inside NetBeans I have written this simple program in this simple programs folder. Okay, this is angular.js.html file. Okay, I will show you the content of this particular file. Whatever I have explained you, that is written over here. Okay, and one more thing I have forgot to explain you here. At the end you can see script src. Okay, script src आपको यहाँ पे दिख रहा है, script tag. Okay, and यहाँ पे हमने source equal to ये line लिखी है. Okay, so what is this? This is your source file of angular.js. Okay, and here there are two ways to include angular.js inside your program. The first way is to directly install that angular.js file, and second way is that you can write content delivery networks. Okay, and here we have written that content delivery network, so we have to just write that particular URL to make this angular.js happen. Okay, so ये मैंने यहाँ पे angular.js का CDN यहाँ पे लिखा है, content delivery network. Okay, so either आप यहाँ पे CDN include कर सकते हो, okay, inside your script tag, or you can install this particular file and you can include that file also. Okay, so let us go again to your NetBeans. यहाँ पे NetBeans पे आइए आप. ठीक है, so यहाँ पे मैंने ये प्रोग्राम लिखा है. So what I will do, I will execute this particular program. For executing this particular program, make sure that your Apache server is started. Okay, I have already started my Apache server. Okay,
and now I will just right click on this particular file name and click on run. Okay, so यहाँ पे मैं run के ऊपर click करूंगा अभी, and you can see the output of this particular program. It is successfully executed here. Okay, अभी मैं आपको थोड़ा सा zoom करके दिखाता हूँ कि क्या होने वाला है. ठीक है, आपको ये दिख रहा है अभी सैंपल एप्लीकेशन. ओके, अभी मैं यहाँ पे जैसे ही नाम लिखता हूँ ए, ओके, और यहाँ पे नीचे देखो आप, यू कैन सी हियर एंटर योर नेम, एक ब्लैंक टेक्स्ट बॉक्स है और नीचे सिर्फ हेलो लिखा है. बट जैसे जैसे मैं यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स में कुछ लिखता हूँ अमोल, तो ऑटोमेटिकली नीचे भी ऑटोमेटिकली वहां पे बाइंड हो रहा है वो डेटा. टेक्स्ट बॉक्स में जो भी लिखा है आपने वो ऑटोमेटिकली नीचे के पैराग्राफ्स के साथ वो बाइंड हो रहा है बाय यूजिंग एनजी बाइंड. ओके, एंड व्हाट इज दिस, इट इज रिटर्न बाय यूजिंग एनजी मॉडल. ओके, सो अमोल and my name. Okay, so you can see that whatever I will write inside this particular text box, it is automatically reflected inside your another paragraph. Okay, so here whatever you will write, you can see that particular thing here. Okay, so this is very simple thing to write Angular JS programs. In your practical assignment there is assignment number 9 about Angular JS. Okay, so we have already provided you the code for that particular assignment number 9. Okay, that also works in the similar way. Okay, just we have written their application for shop cart example. Okay, तो वहां पे जो भी हम एंटर कर रहे हैं वो ऑटोमेटिकली वहां पे ऐड हो रहा है. ओके, so that we will see in the practical session also. Okay, so let us go to our slide again. Okay, so see here, this is how our simple Angular JS program works. It is very simple one. Okay, बट अभी हमको और एडवांस इसमें क्या क्या चीजें है वो भी देखना है. ओके, सो वी विल प्रोसीड फॉर द नेक्स्ट थिंग्स. अभी मैंने आपको डिटेल में कुछ भी बताया नहीं है, जस्ट आई हैव शोन यू one simple example how to write the Angular JS program and what are simple things inside your Angular JS program. Okay, now let us proceed for the next slide. First we will see what are core features of Angular JS. Okay, so here you can see first thing, the data binding. Okay, so what is data binding? It is automatic synchronization of data between model view components. Okay, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि it is automatic synchronization of data between model and view components. मैंने आपको टेक्स्ट बॉक्स में जो लिखा था वो ऑटोमेटिकली पैराग्राफ में भी आपको डिस्प्ले कर रहा है एट द सेम मोमेंट. ओके, सो व्हाट इज दैट, दैट इज डेटा बाइंडिंग बिटवीन योर मॉडल एंड व्यू कंपोनेंट्स. ओके, देन स्कोप. स्कोप नाम का एक वेरिएबल है हमारे एंगुलर जेएस में, वो किस लिए यूज होता है वो हम बाद में देखने ही वाले हैं. बट राइट नाउ रिमेंबर दैट दीज आर द ऑब्जेक्ट्स दैट रेफर टू द मॉडल. ओके, सो आपने जो एनजी मॉडल लिखा है उसको रेफर करने के लिए जो ऑब्जेक्ट यूज होता है वो फ्यूचर में हम यूज करने वाले हैं. सो दैट इज नथिंग बट इट इज द स्कोप, एंड दे एक्ट एज अ ग्लू बिटवीन कंट्रोलर एंड व्यू. ओके, देन व्हाट इज कंट्रोलर? एनजी ऐप, हमने डिवीजन जो टैग था उसके साथ एनजी ऐप इक्वल टू डबल कोट में कुछ नहीं लिखा था. सो दैट इज नथिंग बट एनजी ऐप इज नथिंग बट इट इज योर कंट्रोलर, एंड these are the javascript functions bound to particular scope. ओके, सो एनजी कंट्रोलर, हम कंट्रोलर फंक्शंस लिखने वाले अगले प्रोग्राम्स में. ओके, तो उस टाइम आपको समझ में आएगा कि ये कंट्रोलर क्या चीज है. ओके, सो दिस आर द जावास्क्रिप्ट फंक्शंस बाउंड टू पर्टिकुलर स्कोप. Then next is services. Angular JS comes with several built-in services such as HTTP to make XML HTTP requests. Okay, so these are singleton objects which are instantiated only once in app. Okay, so XML HTTP request class रहता है, उसका हम object create करते हैं, and by using that particular object we fetch the different services. Okay, so that we will see as we proceed. Okay, the next thing you can see here, filters. This selects subset of items from an array and returns the new array. We can filter our data. We can select particular elements from the array also by using the filters. The next is directives. Directives are markers of markers on DOM elements such as elements, attributes, CSS, and more. This can be used to create custom HTML tags that serve as new
custom widgets, AngularJS has built-in directives such as ngbind, ngmodel, etc. हमने अभी के एग्जांपल में कुछ directives already देखे हैं, like ngbind, ngmodel, ngapp. These are nothing but these are the directives inside your AngularJS. Okay, so these are some features of your AngularJS language. Okay, उसके बाद क्या है और templates. Okay, so what are templates? These are rendered view with information from controller and model. This can be a single file or multiple views in one page using partials. ठीक है, you can create some sample files and we can call them as a templates. Okay, single files like index.html or multiple views can be considered as templates here. Okay, then routing concept is there. It is concept of switching views. Okay, आपका जो view है, okay, we can have many views inside our AngularJS program, so we can switch from one view to another, and that is nothing but it is the concept of routing. Okay, it is similar to your computer networking concept itself. Okay, rather than switching to different paths, here we will switch to the different switch views. Okay, the next important thing over here is that मॉडल व्यू whatever, that is MVC. Okay, हमारे बहुत सारे लैंग्वेजेस में उसको मॉडल व्यू कंट्रोलर बोलते हैं, बट यहाँ पे कभी कभी MVW बोलते हैं उसको. ओके, सो मॉडल व्यू whatever is a design pattern for dividing an application into different parts. Okay, MVW क्या है? It is application which divides your application into different parts called as model view and controller, each with distinct responsibilities. ठीक है, मॉडल का अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगा, व्यू का अलग से रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगा, और आपके कंट्रोलर का अलग से रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगा. व्यू का रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? तो आपको शो करना है डेटा. ठीक है, मॉडल का रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? आपके जो इनपुट कंट्रोल्स है उसको हैंडल करना है, लाइक टेक्स्ट बॉक्सेस. ओके, एंड कंट्रोलर का काम क्या है कि it will be a function, JavaScript function which controls your complete application. Okay, so AngularJS does not implement MVC in traditional sense, but rather something closer to MVVW, that is model view view model. Okay, so AngularJS team refers it humorously as model view whatever. Okay, the next core feature of your AngularJS is deep linking. Deep linking allows to encode the state of application in URL so that it can be bookmarked. Okay, so यहाँ पे आप देख सकते हो कि deep linking allows to encode the state of application in URL so that it can be bookmarked. Dependency injection, AngularJS has built-in dependency injection subsystem that helps developer to create and understand and test the applications easily. Okay, so now let us proceed for next slide. So what are different concepts inside your AngularJS? Okay, so this following diagram depicts some important parts in AngularJS which we will discuss in detail in this particular unit. Okay, so these are the important parts of AngularJS, like data binding. Okay, then providers, validators, directives, controllers, modules, then expressions. हम देखने वाले ये सब चीजें. Okay, then factories, services, filters, dependency injection, and scope. So these are the important parts of your AngularJS. Okay, what are advantages of AngularJS? एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं आपको. ओके, so what is AngularJS? What are advantages of AngularJS? Write a simple program to describe the working of AngularJS. ऐसे simple programs आपको आ सकते हैं. So you have to prepare all these things. Okay, so here we will see what are advantages of AngularJS. The advantages of AngularJS are: first is that it provides the capability to create simple single page application. Okay, so हमें बहुत सारे पेजेस लिखने की जरूरत नहीं है. यहाँ पे हमने बहुत सारे वेबसाइट्स में देखा है कि जब हम HTML यूज कर रहे हैं तो बहुत सारे HTML फाइल्स लिख रहे हैं या फिर बहुत सारे JSP फाइल्स लिखते हैं हम. ओके, मोर देन वन फाइल्स वी हैव. Okay, but here there is no need to write different applications. Okay, so here we will have only single page application. Okay, in a very clean and maintainable way. It provides data binding capability to HTML. ठीक है, आपका ये जो AngularJS है, it provides the data binding capability to HTML. आपके HTML के जो controls है,
फॉर्म कंट्रोल्स, उसको बाइंड करने की कैपेबिलिटी हमारा एंगुलर जेएस प्रोवाइड करता है, एंड दैट इज व्हाई it gives user a rich and responsive experience. Okay, then Angular JS code is unit testable. Angular JS uses dependency injection and make use of separation of concerns. A dependency injection kya hai, that we will see later. Okay, then Angular JS provides reusable components. With Angular JS, developers can achieve more functionality with short code. ये important चीज है कि यहाँ पे आपको बहुत सारा कोड लिखने की जरूरत नहीं है एंगुलर जेएस में. With your short code you can write many functionalities. Okay, then next thing is, in Angular JS, views are pure HTML pages and controllers written in JavaScript do business processing. हमने अभी देखा है कि ng bind ऐसे लिखा था, तो वो क्या था हमने, it was written in your paragraph tag. Okay, so views are nothing but these are pure HTML pages, and controllers are written inside your JavaScript where we will write our logic or business processing. On the top of everything, Angular JS applications can run on all major browsers and smartphones. ये आपको ध्यान में रखना है कि Angular JS application हम एक बार लिखेंगे, so it will run on all major browsers. आपका ओपेरा ब्राउजर हो या कोई और ब्राउजर हो, उसके ऊपर रन होगा, और डिपेंडिंग ऑन ब्राउजर इट विल एडजस्ट इट्स कंटेंट्स. ओके, सो एखादा ब्राउजर, सपोज मोबाइल का ब्राउजर है, स्मॉल स्क्रीन है, तो बड़ा एप्लीकेशन उस पर प्रॉपरली दिखना चाहिए, सो दैट इट इज ऑटोमेटिकली एडजस्टेड by using AngularJS. Okay, so these applications can run on all major browsers and smartphones, including Android and iOS based phones. Okay, so let us see next things. Apart from all these advantages, there are some disadvantages of AngularJS. Okay, the first thing is that it is not secure. Okay, why it is not secure? Being a JavaScript only framework, application written in AngularJS are not safe. सर्वर साइड ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन इज मस्ट टू कीप एप्लीकेशन सिक्योर. ठीक है, सो ये क्या है, हमारे जावास्क्रिप्ट फ्रेमवर्क है. सो जावास्क्रिप्ट मींस इट इज क्लाइंट साइड, देयर इज नो सर्वर इंटरेक्शन हियर, so that's why it is not secure. There is no any authentication and authorization from the server side, that's why it is not secure one. Okay, then it is not degradable. Not degradable means what? If the user of your application disables JavaScript, then nothing would be visible except basic page. ये नॉन डिग्रेडेबल क्यों है? बिकॉज इफ यूजर ऑफ एप्लीकेशन डिसेबल जावास्क्रिप्ट, अगर आपने जावास्क्रिप्ट डिसेबल कर दिया, देन इट विल नॉट वर्क. ओके, बट इट विल ओनली सी योर बेसिक पेज. नाउ these are the advantages and disadvantages. After that, what are AngularJS directives? So I have already described you these things: ng-app, ng-model, and ng-bind. So let us see again. AngularJS framework can be divided into three major parts. The first one is ng-app. This directive defines and links AngularJS application to HTML. मैंने आपको बोला था कि ng-app जो लिखा है हमने, वो किस लिए यूज होता है? It defines and links AngularJS application to HTML. Okay, आपका जो AngularJS application है वो HTML के साथ लिंक करता है. ng मॉडल क्या करता है? It binds values of AngularJS application data to HTML input controls. ठीक है, हमने टेक्स्ट बॉक्स लिखा था वहां पे, उसका डेटा बाइंड करने का काम हमने किसके साथ किया था? ये ng मॉडल के साथ किया था. नेक्स्ट थिंग इज ng bind. So what is ng bind? This directive binds AngularJS application data टू HTML टैग्स. ओके, हमने पैराग्राफ टैग लिखा था, उसके अंदर स्पैन टैग लिखा था, और उसके अंदर हमने ng bind इक्वल टू नेम लिखा था. देखो, सो व्हाट वी हैव डन, वी हैव bind our application data, okay, which was present in your ng model with our HTML tags. Okay, so these are the basic parts of your any AngularJS framework. Okay, ng model, ng app, and ng bind. Okay, now let us proceed. See now how to execute these particular AngularJS programs. Okay, so first we have to do some environment setup. Okay, उसको AngularJS के प्रोग्राम्स एग्जीक्यूट करने के लिए हमें उसका एनवायरनमेंट सेटअप करना पड़ेगा. ओके, सो हियर दिस स्लाइड shows you
what things you can do to set up your environment for AngularJS. This describes how to set up AngularJS library to be used in web application development. It also briefly describes the directory structure and its contents. Okay, अगर आपको AngularJS का library install करना है या use करना है, so you can go to the link angularjs.org, and once you go on that particular web page, you will see there are two options to download AngularJS library. These are the two options, AngularJS 1 and second you can see view on GitHub. Okay, so ये दो चीजें हैं by which you can download the AngularJS libraries inside your system. Okay, one way is either to download AngularJS directly from this blue link, or you can view it on your GitHub. Okay, so view on GitHub, by clicking on this button you are diverted to GitHub and get all latest scripts. Okay, and second option is download AngularJS 1. So by clicking on that button, particular button, a screen you will see like this. Okay, so here you will see what kind of version you will require, what kind of build you will require, whether you will require zip folder or unzip folder, and there major thing you can see CDN stands for content delivery network. तो ये आपका लाइब्रेरी है एक्चुअली. ओके, सो ये डाउनलोड होने वाला है यहाँ पे. ओके, देन बोवर, then npm, these are the by default values that will be set as it is, and you can just click on the download. तो ये क्या होगा, ये फाइल जो है cdn, that will be installed, downloaded into your system, and you can give the path of that particular library inside your AngularJS application. Okay, this is one way. And another way is that we have already seen in our first program, directly you can use simple CDN inside your script tag. Okay, script src is equal to ये AngularJS का जो CDN है वो वहां पे लिख दीजिए, आपको डाउनलोड इंस्टॉल करने की कुछ जरूरत नहीं गिरेगी. ओके, so that we have seen, either you can download and host files locally, or you can have the CDN access. Okay, now let us see this simple example again. यहाँ पे और एक एग्जांपल मैं आपको दिखा रहा हूं. ओके, so you can see here, this is your AngularJS application. Inside your head tag I have written script tag here. Okay, in script src I have mentioned my AngularJS library. Okay, that is nothing but it is the CDN of our AngularJS. And inside अभी यहाँ पे body से आपको कोड देखना है. In body tag I have written ng app equal to my app. Okay, so what is this ng app? It is a controller. Okay, or here what it says, it binds your HTML application with AngularJS. Okay, after that I have written ng dash controller equal to hello controller. हमने यहाँ पे एक कंट्रोलर लिखा है और उसको नाम दिया है हेलो कंट्रोलर. ओके, उसके बाद हमने एक वेलकम वर्ड लिखा है हेडिंग 2 में, और उसके बाद हेलो टू डॉट टाइटल टू द वर्ल्ड ऑफ ट्यूटोरियल्स पॉइंट ऐसे लिखा है और डिवीजन टैग क्लोज कर दिया है. उसके बाद हमने यहाँ पे स्क्रिप्ट स्टार्ट किया है, एंगुलर डॉट मॉड्यूल माई ऐप. ओके, माई ऐप इज व्हाट, योर ऐप, दिस एंगुलर ऐप. ओके, सो यहाँ पे एंगुलर डॉट मॉड्यूल फंक्शन आपको लिखना है, दिस इज योर फंक्शन माई ऐप. ओके, डॉट कंट्रोलर हमने यहाँ पे लिखा है हेलो कंट्रोलर, यहाँ पे जो कंट्रोलर लिखा था हमने उसको यहाँ पे लिखा है और ये फंक्शन को कॉल किया है. ओके, सो दिस इज हाउ यू कैन राइट द कंट्रोलर फंक्शंस इनसाइड योर AngularJS. मैं ये डिटेल में आपको नेक्स्ट लेक्चर में भी बताने वाला हूँ. ओके, सो लेट अस सी. यहाँ पे तो क्या किया हमने, स्कोप डॉट हेलो टू में जो भी है हमारा टाइटल वो यहाँ पे आ जाएगा, और यहाँ पे आउटपुट क्या आएगा, स्कोप डॉट हेलो टू डॉट टाइटल. तो हेलो टू डॉट टाइटल, हेलो टू यहाँ पे टाइटल, और यहाँ पे जो भी हम लिखेंगे. ओके, सो दैट विल बी bind with your AngularJS. Okay, so after executing this particular program, what output you will see? Clear all these drawings? Okay, now go to your next slide. यहाँ पे सिंपल प्रोग्राम है, इसको एग्जीक्यूट करने के बाद आपको इस तरीके से आउटपुट दिखेगा. ठीक है, तो आपको यहाँ पे दिख रहा है वेलकम. ठीक है,
ये जो वेलकम है हमारा यहाँ पे लिखा है, देखो यस टू, हेडिंग टू में वेलकम लिखा था। बाद में हमने क्या लिखा है, हेलो टू डॉट टाइटल। ये हेलो टू डॉट टाइटल हमने यहाँ पे आपके स्क्रिप्ट टैग के अंदर कंट्रोलर फंक्शन में यहाँ पे सेट किया है एंगुलर जेएस। ओके, यहाँ पे देख सकते हो आप, वेलकम प्रिंट हो गया, उसके बाद हेलो टू डॉट टाइटल ये यहाँ पे सेट की है उसकी वैल्यू। ओके, एंड इट इज एंगुलर जेएस हियर। ओके, तो यहाँ पे एंगुलर जेएस प्रिंट होने वाला है। ओके, एंड ये आपका नेक्स्ट वर्ड जो है वो एज इट इज प्रिंट हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, सो यहाँ पे देखो आप, सो दिस इज योर आउटपुट वेलकम। ये आपका जो टाइटल था वो यहाँ पे दिख रहा है, एंड टू द वर्ल्ड ऑफ ट्यूटोरियल पॉइंट। एट द राइट साइड यू कैन सी डिफरेंट प्रीव्यूज। You can have different previews as per your desktop, mobile browser or tablet browser. According to that, it will automatically adjust your output. Okay, so this is cross browser compliant also. Okay, I think this is sufficient for today's lecture. Okay, your next lecture has to be started. Just wait for 1 minute. Okay, I want to discuss. I will stop share here. Hello dear Hello, all, dear all. Sagar, Sagar. सबको समझ में आ गया आज का जो आज का पढ़ा है जो हमने? पढ़ा हमने, विश्वनाथ, हिमांशु, हिमांशु, सबको समझ में आ सबको गया समझ में आ गया एंगुलर जेएस? एंगुलर जेएस? बिना युद्धाचं युद्ध शकतात ना ते. बघ काय झालं. Have you understood? ओके फाइन, तो हमने अभी स्टार्ट किया है जस्ट एंगुलर जेएस। तो अभी इसके बाद में हम बहुत सारे एडवांस कंसेप्ट जो है, हाउ टू राइट एक्सप्रेशंस, हाउ टू राइट डिपेंडेंसी इंजेक्शंस एंड ऑल दोस थिंग्स, advanced concepts we will see in the next lecture. Thank you all of you for patiently listening. Be at home, be safe, take care. Okay, thank you all Thank of you you. all of हटवायचं ते हे पण असेल ना.